हाय एवरीवन। चलिए समझते हैं सेट्स को। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। समझिए आपके पास एक मुंबई सिटी है, आपके पास एक नासिक सिटी है और आपके पास एक पुणे सिटी है। थ्री डिफरेंट सिटीज वी हैव एंड दिस इज यू। ओके, try to understand. Okay, and this is you and I'm giving you a task is very simple. You have to visit three different cities. You have to visit Mumbai, Nasik, and Pune. And what is your task? Task is very simple. You need to collect all the data. What kind of data? You will collect Aadhaar card number of the people who is living in Mumbai, Nasik, and Pune. Okay. So what you will do? You will visit Mumbai and you will do what? You will say, okay, let me make a two column. You'll like if you visit Mumbai, you will make a two column. One is a name, other is Aadhaar number. And so in this box you will try to write down what you will write down. For an example, so I'm keeping data very small so that we can understand easily. Suppose there is one person called A, another person is called B, another person is called C. So this is a Aadhaar card number. So Aadhaar card number 1 is belonging to the person A. Aadhaar card number 2 is belonging to the person 2, sorry, person B, and Aadhaar card number 3 is belonging to the person C. So it is a tabular form you found out. Okay, and now in a mathematical way you are going to study it. Okay, so how you are going to represent it? Okay, now understand, this is a one kind of data. एक किस टाइप का डेटा है तुम्हारा? इट इज अ डेटा ऑफ मुंबई पीपल्स। एंड क्या डेटा है? दिस आधार कार्ड नंबर। सो दैट मीन्स व्हाट, ये जो डेटा है तुम्हारा ना, इट इज अ, इसका एक मीनिंग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइक इट इज अ वेल डिफाइंड, यू कैन अंडरस्टैंड। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, no duplicate data is available here. Like it's very simple, straightforward. If my Aadhaar card number is 1, so no one have same Aadhaar card now. Okay, अगर मेरा आधार कार्ड 1 है तो अभी किसी के पास नहीं होगा वैसा। Are you getting my point? If suppose somewhere one is reflecting, that means what, this Aadhaar card number is not belonging to the someone else, actually ये मेरा ही है. Okay, and I am counting 2 time actually. So now I will realize, no, you can't write it 2 times. Okay, so how we are going to represent it? Because in mathematical way, like in a programming way or any ways you are going to solve this problem, so you will take all the data and you will analyze it. But mathematically how we are going to define everything, this is going to use the this is going to use of sets actually. You will take the curly braces and inside the curly braces you will put the data, and this data is called discrete data. Okay, so whenever you have a discrete data you use the curly braces. Okay, so here I will put the Aadhaar card number of Mumbai people. Are you getting my point? And whenever I am putting curly braces, so I have to give one name, because somehow sometime later we have to study on this thing कि इसमें क्या डेटा है, किस तरीके का डेटा है, क्या रिलेशन है, everything we have to study it. So you have to give the name. This is the data of Mumbai people. Okay, so your task has been completed for Mumbai people. Similarly, you will visit for Nasik and you will visit for Pune. Okay, so suppose you visited for the Nasik, and again you will note down all the concept. Like you will note down two things. You are noting name and you are noting Aadhaar card number. And here you again start noting down like just try to understand some random number and random name I am putting it. Okay, and suppose there is Aadhaar number is 6, 7 and 8. Okay, by luck by chance let's try to understand one is also available here. Okay, that means what, if one is available here, that means a, the one is related to the a, because earlier we know that, because हम earlier
टेस्ट करके आ रहे हैं मुंबई में, एंड वी फाउंड आउट कि आधार कार्ड नंबर 1 इज रिलेटेड टू द ए, सो वी नो दिस थिंग। तो नासिक का क्या होगा, अगेन वी विल पुट द curly bracket, inside the curly bracket we'll put the discrete data. So this data is going to like 6, 7, 8, and again we are counting 1. So this is the data of Nasik people. Somehow you visited this Pune city also, and in the Pune cities also you found out the data, and you are going to put here. Are you getting my point? And so let's try to put it. I am just putting 9, 8, 6, 2. Okay, so we got this data from different places. So now, so this data like अब आपको दिया जाएगा, and your task is what, you need to observe this data and tell me कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है इस data से. So you will find many things. Like first thing you can find out, you will say there is a one person, like जस्ट इन टर्म ऑफ सपोज करो कि तुम घर के बारे में सोच रहे हो, लाइक ये बंदे का होम टाउन कहाँ पर होगा, लाइक ये जॉब कहाँ पे कर रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज आल्सो अवेलेबल हियर एंड आल्सो अवेलेबल हियर, दैट मीन्स सम रिलेशन बिटवीन मुंबई एंड नासिक, फॉर विच पर्सन ए. Are you getting my point? So whenever you are talking about sets, we ultimately further we are going to look at the relation actually, because inside the set again, if you have two different sets, we are trying to make a step. We'll try to establish a relation. Okay. So at the end we are going to do like that. So again we try to check it कि two और किसी city में available है क्या? No. Yeah, this available here. So you can understand. Okay. Two is like 2 is means what, name of 2 is b, so b is belonging to Mumbai, like you can understand. So from this example, very simple way तुम समझ सकते हो कि सेट से तुम्हारा क्या होता है, एक वेल डिफाइंड डेटा तुम्हारे पास होना चाहिए फर्स्ट ऑफ थिंग, दैट इज इसका कुछ एक मीनिंग निकलना चाहिए. ओके, दैट इज नॉट कि मीनिंगलेस होना चाहिए. ओके, एंड जो डेटा तुम्हारा होना चाहिए वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. तो टेक्सटुअल ऐसा ही है तुम्हारा कि सेट्स का डेफिनेशन इतना सही है, sets is a well defined object. Okay, and the data जो भी तुम रख रहे हो that is going to be unique. तो इसको हम डेटा भी कहते हैं as well as ऑब्जेक्ट भी कहते हैं. ओके, और साथ में हम इसको मेंबर भी कहते हैं, और साथ में हम इसको एलिमेंट भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं. ओके, ये चीज़ इसको कह सकते हैं. इसके साथ साथ और समझने की कोशिश करिए आपकी, मान लीजिए किसी को भी संशय होगा, डाउट होगा कि हम इस चीज़ को और किस वे में समझ सकते हैं. लाइक आपने बोला कि मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, तो लाइक इफ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, फाइंड आउट द पीपल इन मुंबई हु इज वेरी इंटेलिजेंट, like there is a one word called intelligent. So this intelligent word, like it is a misguiding. Okay, so you can't judge anyone, like किस वे में इंटेलिजेंट तुम पता करोगे, लाइक बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे इंटेलिजेंट पता करोगे या सम अदर वेज के बेसिस पे तुम इंटेलिजेंट पता करोगे, वी डोंट नो. ओके, so this type of the things, if someone saying that collect the data, so that is not going to be the part of sets. Okay, in the similar way, if I'm saying that find out all the person, like all the lady who is very beautiful. Okay, so you like you can't find out. Okay, in which way you are asking, like in which way you are saying that ki beautiful hona chahiye, in the basis of hair or in the basis of skin or anything. Okay, so like data जो तुम्हारा होना चाहिए, that should be like एक मीनिंग होना चाहिए. Like if I am saying that uh, find out all the student who is getting more than 80% marks in 12th, that means what you can find out, because there is a like there is a clear meaning, 80 more than 80% marks, so you can go and you can find out. Okay, so let's see different notation. Okay, so like every instructor will tell you कि सेट्स को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, और जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. पर्सनली व्हाट आई फील, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन द पेपर लाइक कभी पूछना ही नहीं उनको, तो ये बकलोली हम नहीं करेंगे. व्हाट वी विल डू, हमें अपने आप को एक एग्जाम ओरिएंटेड बनाना है पहले तो, देन हमें रिसर्च ओरिएंटेड बनाना है. ठीक है,
पहले एग्जाम हमें क्रैक होना चाहिए, देन वी कैन रिसर्च ऑन इट। ओके, हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। Suppose there is a set. Okay, the previous set you can take, like in the previous slide we are looking at Mumbai data. Okay, 1 2 3 4. Okay, this is the data, this is specific data. So what kind of data it is? It is Aadhaar card number of Mumbai peoples. Okay, 1 is belonging to the someone, 2 is something, 3 is something, and 4 is something. So now, so this is your boss. Okay, and always boss थोड़ा खड़ूस से दिखता है, एंड तुम बॉस के हमेशा नीचे रहोगे, ठीक है। एंड बॉस विल आस्क टू यू, ओके, जबान लड़खड़ा रही है, थोड़ा ध्यान रख लियो, ठीक है। ही विल आस्क टू यू, भाई मेरे को बता दे, ये जो दो बंदा है ना, 2 नंबर वाला बंदा, मतलब जिसका आधार कार्ड नंबर 2 है, ये कहाँ पे रहता है? ही विल आस्क। सो नाउ as per now you have only one set ना, they will say okay boss, I think 2 is from Mumbai. Then he will ask, what about 3? I will say, okay, 3 is from Mumbai. What about 4? Okay, 4 is from Mumbai. What about 5? I will say 5 मुंबई में है क्या? I will ask to myself. Directly नहीं पूछूंगा. I will go to the data and I will check one by one. So now, this is a member. This is data. And this is a name of set. That is a complete sets. Are you getting my point? This is a member. So I will introduce a operator. That's operator is called belong to. Okay, that is a belong to operator. Just try to understand. Belong to is an operator, like प्लस तुम्हारे पास जैसा होता है, इनटू तुम्हारे पास जैसा होता है, इनटू डिवीजन, एवरीथिंग जैसे तुम्हारे पास ऑपरेटर होता है। वो ऑपरेटर किसके बीच में यूज होते हैं? बिटवीन 2 नंबर्स। यहाँ पे बिलोंग टू ऑपरेटर किसके बीच में यूज हो रहा है? बिटवीन 2 थिंग्स, वन इज गोइंग टू बी मेंबर and another is going to be your complete sets. Similarly, 3 is a member of set Mumbai, then 3 belong to M, 4 belong to M, and similarly here what? It's belong to Mumbai, true or false? No, it's not belong to the Mumbai. Then you will cut it. That means what? 5 is not belong to the Mumbai. So in this slide, just to learn about belong to operator, how this is going to work, just remember it. Okay, so why I'm asking it, why I'm telling you, because in 2003 उनके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, बेसिक सेट्स के कॉन्सेप्ट आए थे, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल। लाइक इफ यू हैव दिस डेटा 5 6 and 7, if I am saying that 5 is a member of set A, yes, it is a true. If I am saying that 6 is a member of A, you will say true. If I am say that 7 is a member of A, you will say no, it is a false, because same thing अगर तुम यहाँ पे सर्च करोगे तो नहीं अवेलेबल है, ठीक है। दिस इज कंप्लीट subset. Okay, it is called set of set. Okay, you can read it. There is a one set and inside the set there is another set and inside that there is 6. तो but तुम्हारे पास सिंगल 7 अवेलेबल नहीं है, then that is not a true. Okay, are you getting my point? So that is only knowledge about belong to operator. So let's move on next concept. Let's try to understand. There is a data. This data, like A ना किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय का सैलरी है, just try to understand. And again this is your boss and this is you. Okay, and now your boss is asking to you, filter out all the data or all the employee whose salary is more than 5 lakhs. So what you will do? Okay, I have to give a data to my boss, or like those people का data देना है जिसकी salary more than 5 lakhs है. So what you will do?
you will create another sets. Inside the set you will put all this value. That means you are doing what? You are doing filtering. Okay, 6, 7, 8 and 9. So you collect all the data whose salary is more than 5 lakhs. So you will get this data to your boss. Boss is happy. There is another person like me who is very lazy in term of work. He will say to me, okay, filter out all the data whose salary is less than 5 lakhs. So okay, बॉस को बेवकूफ़ बनाते हैं, होते भी हैं. तो हम क्या करते हैं, हम फिल्टर के बजाय each and everything कॉपी कर देते हैं. Like I am copying all the data here. Okay, so and I will give to this data to my boss. Boss will say, okay, ये बंदे ने काम तो कर दिया है. Let's try to check out. What he was asking? He was asking about give me the all data whose salary is less than 5 lakhs. But instead of this thing, he will say, okay, great, 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 great. Till this point, he is happy. But after this, he is saying, what about this यार? I think बंदे ने ना copy paste करा है. मतलब ये पूरा जो ओरिजिनल था ना, इसको कॉपी कर दिया इधर एंड सिर्फ नाम चेंज करा है. ओके, तो इस बंदे को पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा. क्या समझाना पड़ेगा? नाउ सी हियर, बी का जो ये सब पार्ट है ना, कहाँ से लिया है तूने? ए से लिया है. सी का भी पार्ट तुमने कहाँ से लिया है? ए से लिया है. दैट मीन्स व्हाट? ये दोनों तो है ना तुम्हारा, दैट इज ए बी इज टेकन फ्रॉम ए, सी इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम ए. तो रिमेंबर, दिस इज अ सेट, दिस इज ऑल्सो सेट, दिस इज अ सेट, दिस इज ऑल्सो सेट. तो ये हमारा होगा, एक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होगा सबसेट. एक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होगा सबसेट. आर गेटिंग माई पॉइंट? तो नाउ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी इसका मतलब क्या हो सकता है? बी ना ए का पार्ट है. समझ रहे हो? मतलब ए से हमने बी को निकाला हुआ है. समझ रहा है? एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या समझ, सी इज अ पार्ट ऑफ ए. तो नाउ डिफरेंस क्या है दोनों में? वन डिफरेंस इज वेरी सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड. यहाँ पे जो तुम्हारा लेंथ है ना सी का, लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड द सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड ए, दोनों कैसे हैं बेटा? सेम है. तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर सेट. सो नेक्स्ट टाइम जब बॉस ऐसा बोलेगा कि फिल्टर आउट करो, तो उसके साथ साथ वो ये भी बात बोलेगा कि जो तुम फिल्टर आउट करके न्यू सेट बनाओगे वो तुम्हारा इम्प्रॉपर सेट नहीं होना चाहिए. ओके, एंड हियर यू कैन ऑब्जर्व हियर लेंथ ऑफ बी, लाइक total number of element inside set B is not equal to the total number of. Okay, so this is going to your proper set. Okay, I hope you cleared with the second terminology, that is called subset. Okay, so on the basis of subset I will take one or two example to explain you, just to कि आपको समझ में आए. For an example, I will put an example, you need to just reply it, it's true or false. For an example, I have A is a given set 1, 2, 3, 4 and 5. Let me write it. If I write 5 is a subset of A, it is true or false? Yeah, straightforward is false, because 5 as a member available है, यानी 5 एक complete data है, न कि एक set है. Are you getting my point? जैसा कि हमने सबसेट में देखा कि सबसेट होने के लिए दोनों साइड होना क्या जरूरी है? सेट्स का होना जरूरी है. दोनों सेट क्या होना जरूरी है? सेट्स का होना बहुत जरूरी है. तो अकॉर्डिंग टू दैट फिलॉसफी, दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग. तो हाउ कैन वी करेक्ट इट? सिंपली, ये जो तुम्हारा सिर्फ सिंगल डेटा है, मेक इट into a curly bracket, make it discrete, and then we can say that it is a complete set, it could be the subset of given set A. Okay, now it is a true. So now just tell me, if I have 4, I'm writing it belong to subset of A, then you will say it's wrong, because 4 as a member available hai, na ki as a set available hai. Then what you will do? You will do, okay, make it curly braces. Okay, then it's going to be the true. Okay, I hope you are understanding my point.
सो ऑन द बेस ऑफ दिस बेसिक कॉन्सेप्ट गेट के प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है. विल सी इट. फर्स्ट लेट मी कंप्लीट ऑल द बेसिक, देन आई विल मूव ऑन द गेट प्रॉब्लम. There is another phi. Previously I have taken this example. Okay, so now if I'm writing it 6 subset of A, what you will say? It is true or false? You will say okay, एज अ मेंबर अवेलेबल है. पूरा कंप्लीट चीज कैसा है तुम्हारा? एज अ मेंबर अवेलेबल है. ओके, सो यू विल से दिस इज रॉन्ग. सो हाउ कैन वी करेक्ट इट? इट्स वेरी सिंपल, जस्ट मेक इट सेट्स. How can you make it set? Make it discrete, like make a curly braces. Okay, and similarly if you have a 7 and if you are saying that is subset of A, again it's going to be wrong. How can we correct it? Just make a curly braces. So I hope you understand my point. What is the subset? Subset is what? Whenever we have a two different set, so one of them set is part of another. Okay, like like that you can't say that. You can understand it's A से हमने बी निकाला है और ए से हमने सी निकाला, तो इस अगर इस वाले पार्ट को देखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर सेट हो जाएगा. ओके, आई होप कि तुम्हें समझ रहा है. ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है लाइक देन ही कैन आस्क मी पर्सनली ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और ही कैन ईमेल मी. डिस्क्रिप्शन में हमारे ईमेल एंड एवरीथिंग है. ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है. माई टारगेट इज कि जस्ट समझ में आए एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, नथिंग एल्स. ओके, in the next session we will see the concept of power set and after that we will start the solving the problem like get के जितने problem. Okay, let's try to understand new concept that is called power set. So to understand power set, first of things I can tell you कि definition क्या होता है, but उससे पहले concept को समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, if you want कि मैं पहले definition बता दूँ तो you can write down. Definition is what? All possible subset of a given set. Okay, in the simple way I'm telling you, all possible subset of a given set. Okay, so how can you understand this point? Suppose there is a one class is, okay, there is a class A. Okay, so on the basis of this thing I am creating a one set जिसका नाम है A. 1 2 3 4. Okay, instead of taking 4 data, let me take only 3 data. That is going to easy to explain it. So this is a class owner. Okay, and he want to like communicate करना चाहता है each and every student से. Like in particular days he want कि मुझे आज communicate करना है इनसे. So what are the different ways जिस तरीके से वो communicate कर सकता है? तो अगर इस चीज को एनालाइज करना चाहो तो कि कितनी कितनी तरीकों से वो उनसे मिल सकता है. लाइक अगर मेरी तरीके से क्लास का ओनर रहेगा तो आलसी बंदा रहेगा. व्हाट ही विल डू, ही विल से डोंट लाइक कोई मत आओ यार, डोंट कम एनीवन. अदर वे क्या हो सकता है? आई विल लाइक आई वांट मोर आउटपुट, आई विल से कम but one by one. I will say 1 come first, then 2 come first, then 3 come first, and I have to put sets. Okay, why? Because I'm finding the all subset. Okay, just try to understand. This is another way. What could be the another way? Okay, I will say come but make a pair, like 1 2 आ सकते हो साथ में, या तो 2 3 साथ में आ सकते हो, या तो कौन कौन आ सकता है तुम्हारा 1 3 तुम्हारा साथ में आ सकता है. Now this is a one way. There is another way. I will say okay यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, सब लोग साथ में आ जाओ. This is another way. So what you are understanding here, if you count it, total 8 subset you find out. Okay, टोटल तुमने कितने सबसेट निकाला गया यहाँ से देखो तो टोटल तुमने यहाँ से 8 सबसेट निकाले हैं. ओके, एंड व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट? पावर सेट का डेफिनेशन ही तुमने यही बोला ना, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट A. So power set को we can represent P and here in the bracket we will write the name of set. So from here it will write this part. Okay, so power set के अंदर
क्या क्या चीजें आएंगी, यू हैव टू राइट डाउन दिस थिंग. देन क्या क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी लाइक मेक इट लाइक मैं ऐसा सेट्स बना रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड. ऐसा मैं बना सकता था बट मैं ऐसा बना रहा हूँ, रीजन इज दैट कि मेरे पास यहाँ पर प्लेस है. तो आई विल राइट ऑल द थिंग्स हियर. Okay, so this is the total possible subset of a given set. So now you can count it, total is 8. So now one thing is simple कि अगर हमारे पास ये number of element बढ़ेंगे तो ये तुम्हारा हर बार combination तुम निकालने नहीं जाओगे. Okay, so we need to introduce a formula. Okay, we need to find out one formula. So just try to analyze it, then you can easily find out the formula. So we have total 3 member. So out of 3 member I'm not calling anyone. Okay, 360. Out of 3 member I'm calling only one member, and I'm saying that come one. If I'm saying I'm calling one member, that means what, one by one I'm calling. Okay, if I'm saying 3C2, I'm choosing only 2 people. Okay, and out of 3 I'm taking 2 people, and here I'm taking all the people. Okay, and now class owner इसमें से कोई एक लेगा. Okay, that is going to happen in a day. Okay, that is a OR condition. So whenever you have a OR condition, you have to go for sum rule. Okay, and whenever you have a AND condition, like both things is must like होना ही चाहिए, then you have to go for AND condition, that is called product rule. Okay, so here like class owner के पास क्या है तुम्हारे पास, he have a opportunity, like किसी से भी मिल सकता है, he have a like OR condition, he have a option. Okay, so this is going to be 3C0, 3C1, 3C2 and 3C3. So try to understand this point. So you know that this is a 1, and if you solve it, it is going to 3, and if you solve it, it is going to be 3, and if you this solve it, it is going to be 1. So if you count it, is going to be 8. Okay, so let's try to understand in a general way. In general way is what, if a given data, like if a given sets A is given, and inside A we have n element, then how we can understand कि total उसके subset कितने बनेंगे. Okay, total number of subset, that is your power set actually. हाँ, तो कितने set बनेंगे, like you can easily observe here, out of n member we can like किसी को भी नहीं बुलाऊंगा, out of n member I can call one by one member. I will select only one, I will select only two, I will select only three. This is another chance, or I will say come everyone. Okay, so this is a one formula in permutation combination. This is going to the 2 power जो तुम्हारा यहाँ पर है. ठीक है, 2 power n. And what is the n? Total number of element inside a set A. Okay, so you can observe here we have a 3, then power set total subset कितने बनेंगे, 2 power n, that is the total number of element inside the A. तो इसकी चीज को तुम ऐसा लिख लो, 2 power mod of A, that is the mod is like a length of set A. like element कितने A के अंदर, that is going to be 2 power 3, and answer is going to be 8. Okay, I hope you cleared with my this example, like what is a power set. Okay, so let's move on some problems based on this power set. So first point you can observe here, there is a one symbol called phi. This is called phi. A सभी सेट का सबसेट होता है. ठीक है, phi is a special set which is a subset of all set. Okay, and second point what we can observe from last slide, every set is a subset of itself. You can observe like if you have A 1 2 3, you can at the end we are calling 1 2 3 also, you can see in the last slide. Okay, so that is second point, every set is subset of itself. Okay, and couple of point which I observe, you can write down, like this is a phi and this is not equivalent to the this. Okay, why? Because this is an empty set. Okay, and this is a one set, and inside the set there is a one element that is called phi.
So these are not equivalent. Okay, some people will say 8 भी तुम्हारा false है. This is not equivalent. Why? Because there is a one set and inside the set there is another set and there is no element. But for us, like we understand कि इसके अंदर एक group बना हुआ है, ठीक है? That means what? There is a one element. So this is not equivalent. So these are point you can note down. Okay, so let's try to solve some problem based on power set. So I will put very simple problem. If A is given empty, then find value of P of A and then P of A then P of something. I know that कि अगर आप काफ़ी साल से मेहनत कर रहे हो तो you can solve it easily because काफ़ी इसमें कुछ rocket science तो नहीं है. तो we'll start from here. We need to find out P of A first. As we know the formula कि a power set है, power set में क्या होगा, length of A and how many element are in the in given set, it is a 0. तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 2. तो P ऑफ A में तुम्हें कितने टोटल एलिमेंट मिले, यानी टोटल कितने सबसेट बने तुम्हारे पास 2. अब तुम्हें क्या करना है, A जो है ना इसका पावर सेट निकालना है. दैट मीन्स व्हाट, 2 पावर लेंथ ऑफ दिस. Okay, that is going to be 2 power 2 and it is going to be 4. So you got this part. Okay, and now again you want to find out power set of this part. Okay, so you will write down P of this complete part, P of. Okay, then again you will write down 2 power जितना इसमें element होगा, that is going to the P of. Okay, so if you count it, I'm really sorry, I did mistake here. It is going to be 1. Okay, it is going to be a 2. I'm really sorry for that. Subconscious mind में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है. So this is going to be the 2 power 2 and this is going to be your 4. Okay, so this is a small example you can understand. So this is asked in 1995 GATE. It's very easy question. They have given A 1 2 3. Okay, and they're asking that what is the element in P of A. So just count the number of elements inside the given set and that is going to be your tens, that is going to be 8. So now let me discuss one problem like which is asked in 2015. Okay, so I am clearing my slide. 2015 they ask very simple question, which of the following is true when A is given. A is given is 5 6 and 7. Okay, this is given thing. So we need to verify it. First point हमें क्या प्रूव करना है कि empty is like it's a member of 2 power A. Okay, that means what, we need to find the subset of A. Second question, we need to verify it, empty is a subset of 2 power A. Third point we have 5 6 belong to the 2 power A. Similarly 5 and 6 is going to be the subset of 2 power A. Okay, so we need to check it, which of the following is true. So तो ये तुम्हारा क्वेश्चन पूरा पावर सेट के ऊपर है, तो you can solve it easily. Now this statement is always going to be true actually, so you can note down this is going to be always true. Okay, so to solve this problem we can find out the all subset of given set. So how can you find the subset of given set? Very straightforward, तुम्हें पता है power set निकालना है. Then you can make it P of A is equal to 2 power A. So 2 power A में कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल 8 एलिमेंट आएगा. तो कौन कौन से आएंगे, 5 आएगा विथ करली ब्रेसेस
6 आएगा विद दिस करली ब्रेसेस, 7 आएगा विद दिस करली ब्रेसेस। ओके, नाउ सिंगल सिंगल बुला लिया, नाउ आई विल कॉल विथ पेयर। ओके, so now you can observe here, so just try to prove it। this complete part as a member available है क्या? ओके, as a member available है, yes, so this statement is true। now he is saying that as a subset, that means what, a as a member available है, so that is a wrong। so to make it true we need to put a extra curly braces, then if you can make it extra curly brackets then it is going to be true। ओके, सो लाइक एक क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आता है कि समटाइम दे कैन आस्क लाइक बेसिक क्वेश्चन, लाइक दे कैन टेस्ट योर कॉन्सेप्ट ऑफ कि तुम्हें सबसेट समझा है क्या, बिलोंग टू समझा है क्या, ठीक है, एंड बेसिक बेसिक आइडियाज वो आपके टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें तुम्हारा पावर सेट का की कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गया, सबसेट का कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गया, बिलोंग टू का कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गया। तो ये चीज़ तुम इसको दो, इसको लेके रखो। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस करा है, दैट इज़ अ 5, बिकॉज देर इज़ अ वन चांस कि मैं किसी को ना बुलाऊँ, ठीक है। सो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइव सेशन में, तो समटाइम मिस्टेक होती है। लाइक हम ऐसा नहीं है कि हम पहले से स्क्रिप्ट लिख रखे हैं और उसके हिसाब से, या फिर हम पहले से इसको कुछ कर रखे हैं, लाइव में सॉल्व कर रहा हूँ, समटाइम मिस्टेक हैपन। सो like you can understand my point। okay, so I hope you like this thing। so in this next session we will try to cover all the operation on sets, then based on operation we'll try to solve all the gate problem। so let me give you one more problem। I think we have only 3 problems। this is 2015 problem। okay, before that I discussed in 1995 problem, and before that there's a p of something which I was solving, that is a 2003 problem। and 2003 I think IIT Madras has designed the paper। okay, so nothing like कोई भी complex नहीं, it's very easy thing। okay, so now we will see in the next session like operation on sets and everything। okay, तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय एवरीवन।